All right, guys, good evening, everyone. I hope you people are doing so good. I hope that everything is going fine. I am considering कि आप लोग सभी पिछले लेक्चर्स बहुत अच्छे से लगा रहे हैं. पिछली रिकॉर्डिंग में हमने क्लाउड खत्म किया था कंसेप्ट और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डीबीएमएस को लेकर. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डीबीएमएस का टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डीबीएमएस का टॉपिक आपका 4 मार्क्स में आता है. डीबीएमएस के टॉपिक के अंदर हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं. एक हम पढ़ेंगे डीबीएमएस है क्या, एक हम पढ़ेंगे डीबीएमएस के मॉडल्स और एक हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस. 4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. सो गाइस, focus with me and try to understand all these concepts on DBMS. Okay, so let's start the class with DBMS today. Now, to understand what is DBMS, DBMS stands for your database management system. DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को मैनेज करने में हेल्प करता है. तो एक डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को मैनेज करने में मदद करता है. सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन भी बोलते हैं. सो बेसिकली डीबीएमएस इज जस्ट एन एप्लीकेशन. नाउ डीबीएमएस डेटा को मैनेज करता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर. एक हायरार्किकल मॉडल है हमारे पास जिसके अंदर डीबीएमएस डेटा को मैनेज करता है, विच इज कॉल्ड मैनेजिंग. डीबीएमएस को हम कंसिडर करते हैं इस टेबल की तरह. डेटा हमारा सेव होता है टेबल्स के अंदर इन डेटाबेस. To understand what is database, I will try to draw a diagram. हमारे पास एक टेबल होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होती हैं हमारे पास. जस्ट लाइक एक्सेल के अंदर जिस तरह से आपके पास टेबल्स होते हैं, इसी तरह से हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होती हैं. इस रो के अंदर इफ यू सी दैट, आई विल पॉइंट आउट द नेम ऑफ, लेट्स से दिस इज अ टेबल ऑन एम्प्लॉय टेबल है. Let me make a diagram. I have employee ID, employee का नाम, employee का एड्रेस, employee का ईमेल, employee का फोन नंबर. There is a data behind. इसके नीचे डेटा लिखा हुआ है. Now try to understand this. That this name of the employee is the name of the table. These are called to be characters. The name of the column is called field name, and the name of the table is called to be record. Through this table, what we have understood is that all characters make one field, all fields make record. And when I have so many records like these tables, let's make one file. So many files make one database.
So go back again, try to see this example. Check out, check this table. In this table, I have employee ID, employee name, employee का address, employee का email, employee का phone. And this whole table is made for the employee. And behind employee ID, if you can check, these are called to be characters. The name of the column is called to be field name. And the name of the whole table is called to be the record. So when you have all characters combined, that is called one field. When I combine all the fields together, that it became one record. So this whole table is a record. One table is called to be record. And when you have so many tables, that makes files. And when you have so many files, that makes database. So this is database. Database is basically the collections of files which have so many records inside. This is what your database is all about. Now, the software which manages the database is called DBMS. So, the software which manages database is called DBMS. The software which manage database are called to be DBMS. Try to understand the concepts of DBMS now. If you remember, मैंने आपको करवाया था क्लाइंट और सर्वर का रिलेशनशिप. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको क्लाइंट और सर्वर का रिलेशनशिप समझाया था. आई हैव सर्वर, दिस इज क्लाइंट. When client and server are interacting with each other, and if this one is two-tier architecture, then client will have its application. Through this application, client takes the data or access server. If you remember the concept of fat client, हमने चैप्टर नंबर 3 में किया था फैट क्लाइंट का कंसेप्ट. फैट क्लाइंट के कंसेप्ट में आपने सीखा था कि सर्वर और क्लाइंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और क्लाइंट जब सर्वर से कोई भी चीज मांगता है तो इस एप्लीकेशन, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो सर्वर से डेटा को लेगा और सर्वर में डेटा को देगा. अब ये सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है? यही सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं DBMS in the case of two-tier architecture. But अगर मैं इसी डायग्राम को 3-tier architecture में बनाऊं, so try to see what will happen in 3-tier. If I draw this box, now this is client, this is server, and I have in between the middleware. Then obviously the interaction is there with the client, with the middleware, and from the server is going back from the middleware. Now this is called 3-tier architecture, जिसके अंदर आपका क्लाइंट thin client है. In this situation where your server is thin, then this A software which is acting from the server side, is actually the DBMS. ये DBMS है जो सर्वर की हेल्प कर रहा है ताकि
क्लाइंट सर्वर में से चीजों को निकाल सके. These are all the previous things. So in 3-tier architecture, this is the DBMS, and in 2-tier architecture, this is the DBMS, which is available in the client side. So the importance of DBMS you know really well. DBMS यहाँ पर भी है और DBMS यहाँ पर भी है. This is what we have done in 3rd chapter previously. So I hope that you have seen कि DBMS actually है क्या. So this is what DBMS is, और हमने इसी DBMS को स्टडी करना है, इस आर्किटेक्चर को स्टडी करना है जो मैं आपको डायग्राम के थ्रू ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में दिखा चुका हूं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर डीबीएमएस, व्हिच आई कॉल इट एज द मॉडल्स ऑफ डीबीएमएस. So let's go back to the material and try to see what we need to study. So look at this. In DBMS, this is what the hierarchy is. ये है वो सारी hierarchy जिसमें कैरेक्टर्स को कंबाइन करो फील्ड्स बनती हैं, फील्ड्स को कंबाइन करो रिकॉर्ड्स बनते हैं, रिकॉर्ड इज फाइल एंड डेटाबेस. दिस इज व्हाट आई हैव टॉट यू. नाउ आई हैव द मॉडल्स ऑफ डीबीएमएस. आई हैव टोटल फोर मॉडल. Number 1 is hierarchical model, number 2 is network database model, number 3 is relational model, and number 4 is object oriented model. So I'll start with the first one, which is called hierarchical database model, which I always call it as HDM model, hierarchical database model. So let me start with hierarchical database model. So what is this HDM all about? Hierarchical database model. Try to see. What is hierarchy? Hierarchy look like this. This is called hierarchical. So if you check this hierarchy, there are some key words which you need to remember. The first thing is called the relationship here is between रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड. रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप है. दैट मीन्स दीज रिकॉर्ड्स विच यू सी द सर्कल पार्ट आर कॉल्ड टू बी रिकॉर्ड्स. नाउ एवरी रिकॉर्ड हियर इज कॉल्ड टू बी नोड. सो एवरी रिकॉर्ड इज कॉल्ड टू बी व्हाट? नोड. देखिए ये हमारा हियरार्किकल मॉडल है. हियरार्की के अंदर रिकॉर्ड्स आपस में इस पैटर्न में जुड़े होते हैं. ये रिलेशनशिप रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड के बीच में है और हर रिकॉर्ड को हम इस मॉडल में नोड कहते हैं. इफ यू सी दिस डायग्राम वेरी केयरफुली, दिस डायग्राम इज लुकिंग लाइक इनवर्टेड ट्री पैटर्न, उल्टा ट्री. देखो ये जो डायग्राम नजर आ रहा है ये आपको उल्टा ट्री नजर आ रहा है, उल्टा ट्री. तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड ट्री पैटर्न. एंड इन दिस यू आर हैविंग ए पेरेंट एंड दिस इज कॉल्ड टू बी द चाइल्ड. So in this you have parent child relationships. The top node here, the top node is called to be the parent and the following node is called to be the child. So see this diagram, this one is called to be parent and this one is called to be the child. So that means the records are having, these records are having parent child relationship. जितना अभी किया है मैं दोबारा से बताता हूं. राइट साइड पे जो आपको दिख रहा है वो डायग्राम है हियरार्किकल मॉडल का. हियरार्किकल मॉडल में रिकॉर्ड्स के रिलेशनशिप को डिफाइन किया जाता है. रिकॉर्ड्स को हम नोड बोलते हैं. ये उल्टा पेड़ है, इन्वर्टेड ट्री इसका स्ट्रक्चर है और ये फॉलो करता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को.
नाउ यू नो, अगर मैं किसी भी पेड़ को उल्टा कर दूं, किसी भी ट्री को उल्टा कर दूं, तो सबसे ऊपर क्या आ जाएगा? देखिए, सबसे ऊपर अगर ट्री को उल्टा कर दिया जाए तो सबसे ऊपर होता है उसका रूट. So that means the top node of a tree is called what? Root. ट्री के टॉप नोड को हम रूट बोलते हैं. So what you have studied? The relationship it is between record and record. रिकॉर्ड को हम नोड बोलते हैं. इन्वर्टेड ट्री पैटर्न है. टॉप वाले नोड को हम पेरेंट बोलते हैं और नीचे उसके चाइल्ड होते हैं, इसलिए ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फॉलो करते हैं. टॉप नोड ऑफ द ट्री इज कॉल्ड टू बी रूट, और टॉप नोड को क्या बोलते हैं? रूट. नाउ एज आई डिस्कस्ड विद यू रिलेशनशिप्स, अभी मैंने रिलेशनशिप्स के बारे में बताया. रिलेशनशिप हमारे 4 तरह के होते हैं. वन इज कॉल्ड टू बी वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मेनी रिलेशनशिप, many to one relationship and many to many relationship. ये 4 रिलेशनशिप होते हैं. As hierarchical model is following parent to child relationship. Parent to child relationship क्या कहता है कि every parent can have many children, but a child will always have one parent. मतलब एक पेरेंट के, this is parent, can have more than one children, but the child will only have one parent. Can have many, but he will only have one parent. जिसकी वजह से ये जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, इट ओनली फॉलोज 1 to 1 रिलेशनशिप और 1 to many रिलेशनशिप. कैसे? 1 is the parent, 1 is the child, and in some situations 1 is the parent and it can have many child. So the relationship which is followed in this hierarchical model is only 1 to 1 and 1 to many. So मैं दोबारा से बताता हूं, हमने क्या पढ़ा है hierarchical database model के अंदर. ये जो रिलेशनशिप है ये रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड के बीच में है. रिकॉर्ड्स को हम नोड बोलते हैं. ये एक इन्वर्टेड ट्री पैटर्न को फॉलो करता है. इसमें जो रिलेशनशिप है वो पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप है. पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप का मतलब होता है एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं, बट एक चाइल्ड का हमेशा एक ही पेरेंट होगा, जिसकी वजह से वी फॉलो 1 to 1 रिलेशनशिप एंड 1 to many रिलेशनशिप. क्योंकि एक पेरेंट कैन हैव एक चाइल्ड भी और एक पेरेंट कैन हैव मेनी चाइल्ड भी, इसलिए 1 to 1 और 1 to many रिलेशनशिप को फॉलो किया जाता है hierarchical मॉडल के अंदर. सो लुक एट दिस, आई विल गो बैक. इट इज बिल्कुल सेम टू सेम हमारे मटेरियल में लिखा हुआ है. इन hierarchical database models, records are logically organized into hierarchy relationship. They are formed into inverted tree pattern. So very very important, inverted tree pattern, ulta पेड़. All records in hierarchy are called nodes. Important. Nodes are related to each other in parent-child relationship. Again, very important. Each parent record may have one or more child, but no child record may have one or more parent record. This is what we have studied. Thus, this relationship will be 1 to 1 and 1 to many relationship. Very, very important. 1 to 1 and 1 to many relationship यहाँ पे फॉर्मेट किया जाता है, फॉलो किया जाता है. The top parent record in the hierarchy is called to be the root record. This is the root record. And the record that owns other records are called to be
पेरेंट रिकॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट रिकॉर्ड कौन सा है, रूट रिकॉर्ड कौन सा है। एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं, यू कैन पोर्ट्रे एनी एग्जाम्पल वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट मॉडल वी हैव इज कॉल्ड टू बी द नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल जिसे हम NDM भी कह सकते हैं, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट मॉडल विच इज कॉल्ड नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, NDM। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल कि पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि नेटवर्क हमारा डेटाबेस मॉडल किस तरह से सिमिलर है HDM के, हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल के, और थर्ड पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे किस तरह से ये डिफरेंट है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल से। सो ये जो पूरा का पूरा इसका आंसर है जो 4 मार्क्स में आएगा। दिस इज द फॉर्मेट, this is the format to write in exam। पहले हम इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे कि एनडीएम होता क्या है, दूसरा एनडीएम किस तरह से सिमिलर है एचडीएम के, और तीसरा वो किस तरह से डिफरेंट है एचडीएम से। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो पार्ट ऑफ एनडीएम। व्हाट इज एनडीएम? एनडीएम के अंदर थोड़ा सा हिसाब अलग है। एनडीएम के अंदर अगेन द रिलेशनशिप इज बिटवीन द रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप है, बट दे सी दीज रिकॉर्ड्स एज इन सेट्स। आई होप आपने मेरे साथ सेट्स नहीं किया हुआ, मगर आपने मैथ्स में सेट्स जरूर पढ़ा हुआ है। इफ यू रिमेंबर, मैथ्स में सेट्स एक बहुत अजीब सा डिफरेंट सा टॉपिक हुआ करता जिसमें कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता था। इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं सेट्स के अंदर लाइक दिस। नाउ इन दिस सेट्स A is called to be the parent and small a inside the curly brackets are child. Parent is also called as owner record, and they are called to be members, member record. So I am explaining the introduction back again. इसके अंदर भी हमारा रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड रिलेशनशिप होता है, पर हम इसमें कंसिडर करते हैं सारे के सारे रिकॉर्ड्स को सेट्स में। सेट्स आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, बाहर कैपिटल ए है, अंदर ए कॉमा बी है। दिस इज कॉल्ड पेरेंट, अंदर उसके चाइल्ड है। पेरेंट को हम ओनर रिकॉर्ड भी बोलते हैं और चाइल्ड को हम मेंबर रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। बट ड्यू टू दिस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की वजह से दिस मॉडल इज सिमिलर, दिस मॉडल इज सिमिलर टू HDM बिकॉज हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में भी सेम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप था, बट दिस मॉडल इज बेसिकली डिफरेंट ऑल्सो थ्रू HDM। हाउ? एक बड़ी अजीब सी चीज कहता है ये मॉडल। ये मॉडल कहता है कि पेरेंट है हमारे पास, एक पेरेंट का, इफ यू रिमेंबर हायरार्किकल में कहता है कि एक पेरेंट का मल्टीपल चाइल्ड हो सकता है, मगर एक चाइल्ड का सिर्फ एक पेरेंट होगा। वो हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल कहता था, मगर नेटवर्क डेटाबेस मॉडल इसमें बिल्कुल अलग है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल से। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल बोलता है कि एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड जरूर हो सकते हैं, बट एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। वाओ, क्या डिफरेंट कंसेप्ट है। एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, मगर एक चाइल्ड का भी मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं।
Now, how can I represent this into sets? Check it out. When I represent this into sets, A curly bracket A comma B, B curly bracket B comma C, C curly bracket B comma D. So this means this B is being shared by multiple parents. That means A is having A comma B, B having B comma C, and C is also having B comma D. So look at it, this is being shared, और इस शेयर करने की वजह से you not only have one to one, one to many, but also you have many to one, that is small b is having relationship with A also and also B. That means you have many to one and also many to many relationship. So you can have this one because of NDM is different than HDM difference, and this one is similar with HDM. मैं दोबारा से करवा रहा हूं पूरे कंसेप्ट को. लुक एट द कंसेप्ट. NDM में रिकॉर्ड्स का रिलेशनशिप है. वी सी द रिकॉर्ड इनटू सेट्स. फॉर एग्जांपल A कॉमा B पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होने की वजह से ये HDM के साथ सिमिलर है, जिसकी वजह से वन टू वन और वन टू मेनी रिलेशनशिप होता है. बट हाउ इट इज डिफरेंट देन HDM? लुक एट इट. HDM कहता था एक पेरेंट का एक चाइल्ड या मल्टीपल चाइल्ड हो सकता है, मगर एक चाइल्ड का सिर्फ एक पेरेंट होगा, जिसकी वजह से वन टू वन या वन टू मेनी रिलेशनशिप होगा. बट नेटवर्क मॉडल कहता है कि एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, मगर एक चाइल्ड के भी मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं. हाउ? लुक एट द डायग्राम हियर. दिस डायग्राम शो दैट B, स्मॉल b, is a member record of parent record which is capital A, parent record which is capital B, and parent record which is capital C as well. जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आपका मेनी टू वन बन जाता है. मेनी टू वन कैसे? मेनी पेरेंट्स वन चाइल्ड. मेनी टू मेनी कैसे? बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारे चाइल्ड का रिलेशनशिप भी हो सकता है इसके अंदर. सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट नेटवर्क डेटाबेस मॉडल. सो चेक आउट नेटवर्क डेटाबेस मॉडल विद मी. The network model is a variation on hierarchical model. It's a very different variation, मतलब different, to extend that it is ability to concept on multiple branches concept. Multiple branches का मतलब ये है that child is being accessed by multiple records and meeting from one or more nodes, while the model differs also from hierarchical model that in that branches can be connected to multiple nodes. That means one node can be connected to multiple nodes. The network model is able to represent redundancy. What is redundancy? The meaning of redundancy is duplicacy. Duplicacy को सबसे ज्यादा efficiently ये मॉडल डिफाइन करता है. देखो कैसे डुप्लीकेसी को. B is duplicate, this B is duplicate, this B is duplicate. Instead of एक रिकॉर्ड which is A is having A comma B, and B is also having B comma C. Instead of having multiple duplicate records, it is
time consuming to access these records, cost increase हो जाती है, डाटाबेस हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर इस तरह से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हमारे पास आने शुरू हो गए. सो व्हाट वी डू, इंस्टेड ऑफ connecting with this, we connect directly with this. So we connect without making another B, जिसकी वजह से इस पूरे के पूरे रिकॉर्ड के अंदर, पूरे इस मॉडल के अंदर रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी को बहुत एफिशिएंटली रिकॉग्नाइज किया जाता है एज कंपेयर टू हायरार्किकल मॉडल. वी कंसिडर all these into one sets. हम सभी को एक सेट के अंदर देखते हैं. सेट, यू नो द कर्ली ब्रैकेट लाइक दिस, सेट्स A, B जो मैंने ड्रॉ किया. Each set is composed of an owner record, capital A, and one or more member records. You know that. This is similar to hierarchy. This one is similar because they are following the parent-child relationship here. Thus, we have one-to-one relationship and one-to-many relationship between the records. But how it is different from these? How it is different? Check it out. How it is different than hierarchical? However, unlike hierarchical node model, the network model also implement record to be member of more than one set at a time. Thus, this feature allows network model to be implemented one-to-many to one and many-to-many relationship. Why? Because child is present in multiple parents. That is why it is different than hierarchical model. The next model we have is called to be relationship database model. I call it as RDM, relationship database model. Now we call it as RDM, relationship database model. Now this database model is one of the most default model of DBMS. Or I say most common model. Most common model used in DBMS. This model is based on basically table format. The same table जो मैंने क्लास शुरू करवाने से पहले ड्रॉ किया था, ये पूरा का पूरा मॉडल इस टेबल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमारे पास तीन चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है. द टेबल इज व्हाट विद रोज, कॉलम. रोज एंड कॉलम के साथ जो बनाया गया टेबल है उसे हम रिलेशनल डाटाबेस मॉडल कहते हैं. ना इस टेबल में किस तरह से हमें लर्न करना है, इस टेबल को तीन चीजें हैं जो ध्यान रखनी है हमें इस टेबल के अंदर. वो तीन चीजें क्या हैं? द फर्स्ट पार्ट, फोकस ऑन, वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स in RDM. Number one is called relation. What is relation? Number two, what is attribute? तीन चीजें ध्यान रखनी है. The meaning of relation, attribute and domain. ये तीन चीजें क्या हैं इसके बारे में ध्यान रखना है. Now what is relation? The name of table is always called relation. Attribute, the field name. The field names are called to be attributes. And what is domain? The limit
or the value in any column is called to be domain. The limit or any value in the column is called to be domain. Now I will draw a diagram of a table to teach you इस table में relation, attribute और domain क्या होंगे. Now check it out. ये मैं employee का table draw कर रहा हूं. This is called employee का table. Now इसमें हमारे पास rows and columns हैं. Now, what is employee? The name of the table, check it out. The name of the table is called relation. So name of the table is employee. Employee is the relation. The name of the table name का नाम क्या है table का? Employee, and that is called relation. Attributes क्या है? Field के name. So मैं attributes draw करने जा रहा हूं. Employee की ID, employee का name, employee का date of birth, employee का address, employee का email, employee का पैन कार्ड नंबर, ये सब चीजें आपकी हैं. These are called attributes. And now, नाम आपका मिनिमम और मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का होगा? आपका नाम मिनिमम और मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का होगा? ये है आपका डोमेन. आपका नाम मिनिमम किसी का नाम भी आप मुझे पूछे तो 2 लेटर्स का होगा और मैक्सिमम इट कैन बी 40, 45, एनीथिंग. सो दैट इज द लिमिट. इफ आई से आई हैव अ कॉलम विच इज कॉल्ड फोन नंबर. फोन नंबर का डोमेन क्या होगा? फोन नंबर का डोमेन हमेशा होगा 10, क्योंकि फोन नंबर 10 डिजिट का होता है. सो फोन नंबर का जो डोमेन होगा इट इज ऑलवेज 10. ओके, सो 3 चीजें हमने ध्यान रखनी है. वो 3 चीजें क्या है? रिलेशन क्या होता है? नेम ऑफ द टेबल इज ऑलवेज कॉल्ड रिलेशन. एट्रीब्यूट क्या होता है? फील्ड का नाम, उसे एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. और डोमेन क्या होता है? जो हम वैल्यूज लिमिट सेट करते हैं किसी भी कॉलम की. जैसे फोन नंबर इज अ कॉलम, इसकी लिमिट हमने क्या सेट होती है? 10 डिजिट का हमारा फोन नंबर होता है, तो उसकी लिमिट क्या है? 10. नाम की लिमिट क्या है? मिनिमम 2, मैक्सिमम 40-45 का हो सकता है. दैट इज दी डोमेन. सो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है. वो तीनों चीजें मैं आपको बता देता हूं कहां लिखी हुई हैं. द थर्ड डेटाबेस मॉडल, रिलेशन डेटाबेस मॉडल. एंड where it is written, look at, check it out. The relation database allows definition of data and their structure, storage, and the integrity constraints, that is the limits, which can be organized in table structure. So table structure में इस पूरे मॉडल को डिफाइन किया जाता है. A table is a collection of record and each record contains the same fields. Fields होती हैं उसमें. 3 key terms, we'll be talking about 3 key terms here, which I told you before also, which are called relations, attributes and domains. Relation क्या है? Relation is a table with column and row. That is the name of table. Table कौन सा है जिसके अंदर rows and column है? The named columns of the relation are called attributes, which are called field names. And domain is the set of values. The attributes are allowed. Fields को कितनी values allowed हैं? There are a set of values which are called your domain. Next thing, इस पूरे टेबल में we have rules to follow. 3 rules है हमारे पास which we need to follow. पहला, the first rule कहता है, check it out,
तो फर्स्ट रूल, दीज आर ऑल रूल्स, ये सब आपके रूल्स हैं। फर्स्ट रूल कहता है ordering of columns is immaterial. Now what is immaterial? Ordering of column is immaterial. The meaning of immaterial is that order of fields does not matter. देखो, अगर आप इंप्लॉय आईडी को उठाकर यहां रख दें, नाम को उठाकर पीछे रख दें, ईमेल को आगे ले आए, ये जो ऑर्डरिंग बनी हुई है आपके कॉलम्स की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इममेटीरियल। द ऑर्डरिंग ऑफ कॉलम इज इममेटीरियल। दैट मींस ये जो ऑर्डर्स बनी हुई है कि एम्प्लॉय आईडी नंबर 1 पे आना चाहिए, नाम नंबर 2 पे आना चाहिए, ये इममेटीरियल है, ये जरूरी नहीं है। आप नाम को उठाकर लास्ट में रख दो, एड्रेस को सबसे आगे रख दो, ईमेल को सबसे आगे रख दो, उससे कभी भी टेबल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पहला रूल कहता है कि टेबल बनाते हुए टेबल की फील्ड के जो नाम है उनकी ऑर्डरिंग पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जहां मर्जी ऑर्डर को रखिए, फिर भी टेबल काम करेगा, तब भी डेटाबेस काम करेगा, तब भी चीजें सेव होंगी और तब भी चीजों को रिट्रीव किया जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड दैट द ऑर्डरिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। सेकेंड, there cannot be identical records in the table. Obviously we cannot have identical records, because if we have identical record there will be a duplicacy, duplicate record बन जाएगा, और you know that duplicate record is not good for our database. हमारे डेटाबेस में डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। सो सेकंड चीज, रूल नंबर 2 क्या होना चाहिए कि सेम रिकॉर्ड, मतलब जो नाम है एम्प्लॉय, दो एम्प्लॉय रिकॉर्ड नहीं हो सकते। अगर दो एम्प्लॉय रिकॉर्ड होंगे तो कंप्यूटर कंफ्यूज रहेगा कि कौन से एम्प्लॉय रिकॉर्ड को अपग्रेड करना है, अपडेट करना है या एक्सेस करना है। और तीसरा, एवरी रिकॉर्ड विल कंटेन सिंगल वैल्यू। देखिए, एवरी रिकॉर्ड विल कंटेन सिंगल वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, नंबर 3 पे कहता है रिकॉर्ड विल हैव सिंगल वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल वैल्यू? सिंगल वैल्यू का मतलब है स्पेस बार नॉट अलाउड, स्पेस बार नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से डेट ऑफ बर्थ, सपोज डेट ऑफ बर्थ इज माई फील्ड का नाम, सो आई कैन नॉट राइट डेट ऑफ बर्थ विथ स्पेस इन द फील्ड का नाम। I have to write either DOB without space, और मैं चालाकी कर सकता हूं, लिख सकता हूं डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर बर्थ। मगर अंडरस्कोर मैंने इसलिए लगाया कि अंडरस्कोर दिखता नहीं कई बार, तो ऐसा लगता है स्पेस है, पर हमने कंप्यूटर के साथ चालाकी कर दी। कंप्यूटर विल कंसिडर दिस इज अ, व्हाट इज दिस इज अ सिंगल वैल्यू। सो रूल नंबर 3 कहता है सिंगल वैल्यू होनी चाहिए आपके रिकॉर्ड के अंदर। मतलब ये जो आपका कॉलम है, इस कॉलम के अंदर ईमेल जो है उसमें नो स्पेस, डेट ऑफ बर्थ में नो स्पेस, नाम में नो स्पेस। इसीलिए आपके नाम के साथ हमेशा लिखा जाता है, जब भी आप नाम के बारे में बात करते हो ना, तो जो कॉलम बनते हैं आपके, एक बनता है आपका फर्स्ट नेम के हिसाब से और एक बनता है आपका सर नेम के हिसाब से। फर्स्ट नेम और सर नेम इससे लिखा जाता है क्योंकि अगर हम दोनों नाम साथ में लिखेंगे तो स्पेस बार ना आए, हमें स्पेस बार नहीं चाहिए, वी डोंट नीड स्पेस बार। सो ये 3 रूल्स हैं आपके। पहला है द ऑर्डरिंग ऑफ द फील्ड इज इममटेरियल। सेकेंड हमने पढ़ा था नंबर 2 पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए, और तीसरा हर रिकॉर्ड में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल योर डाटाबेस मॉडल, योर रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल समझ आया है। बाकी चीजें आपकी अगली क्लास में कंटिन्यू की जाएंगी और अगली क्लास के अंदर हम मॉडल कंसेप्ट को खत्म करेंगे। आप तब तक इन तीनों चीजों को अच्छे से पढ़ के आइएगा। That's all for today, guys.
I hope you have understood all those things. Take good care, guys. Study hard and remember, पेपर्स बहुत नजदीक आने वाले हैं. फटाफट से अपनी रिकॉर्डिंग क्लासेस खत्म करिए और कंटिन्यू करिए. थैंक यू सो मच. गुड बाय.